your 0 hour. Shri Vaiko, please continue. Do you have your 0 hour? Zero name is not in the list, but he is calling you out of the list. Shri Dhananjay Mahadik. Sir, he's getting. धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति जी, मैं समझता हूं किसी भी शहर का अगर पूरा और परिपूर्ण विकास होना है तो उसे अच्छी कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और सबसे महत्वपूर्ण है सर एयर कनेक्टिविटी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को संज्ञान में लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आरसीएस स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए उड़ान योजना लागू की थी। उड़े देश का आम नागरिक ये कह के जो हवाई चप्पल पहनेगा वो भी हवाई जहाज में सफ़र करेगा, ऐसी स्लोगन देके ये योजना शुरू की थी सर। सभापति जी, महाराष्ट्र में सोलापुर ज़िला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ज़िला है सर। यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। सोलापुरी ब्लैंकेट, सोलापुरी तौलिया, नैपकिन पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है सर। यहाँ पे देश की सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री सोलापुर में है सर, 38 शुगर फैक्ट्रीज है। यहाँ पे पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है। और इसी के चलते जो यहाँ पे सोलापुर में होडगी रोड में सर, हाफ मिनट सर, क्वेश्चन आवर सोलापुर सर, होडगी क्वेश्चन नंबर 46, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। Thank you, Honorable दूसरों को दे दिया चांस। Question number 46. Honorable Minister. Supplementary one. Thank you, Honorable Chairman, sir, and thanks to Honorable Minister as well. My supplementaries are very basic. First is, how many people were living in Delhi's Prem Nagar or Tyagraj slum, which has been demolished, and whether any action has been taken against the authorities who demolished these slums without giving prior notice of demolition to the dwellers? Honorable Minister. Sir, I am very grateful to the Honorable Member for having raised this question, because this provides me an opportunity not only to share some facts, but also to provide a perspective. I would just like to start at the beginning. The Honorable Member has used the term demolish, and he has used the word slums. Let me state and submit to this House, sir, that the policy of the government of the National Capital Territory of Delhi is a policy which was enunciated by the government of the National Capital Territory of Delhi on 11th December 2017. Personally, whenever I have appeared before this August Assembly, always suggested that we use terms like informal settlements, because that term describes what actually happens. The term slum, sir, if I have your permission, is not only a pejorative, but it also points in the direction of failure of policy and other issues. This policy of the government of Delhi of 11th December 2017, which via a subsequent notification has been turned by the government of Delhi as the Mukhyamantri Awas Yojana, but which is actually a slum rehabilitation or an informal settlements relocation policy, stipulates in very clear terms, and I want to read out a few basic provisions of this policy. It stipulates, sir, that eligibility for rehabilitation or relocation should be there for all Jhuggi Jhopri Bastis, and I choose my words very carefully. Jhuggi Jhopri Bastis, which came up before 1st January 2006. These shall not be removed without providing them alternate housing. Jhuggis which have come up, now these are individual Jhuggis, which have come up after this or before 1st January 2015 shall not be demolished without providing alternate housing. This is the stipulation. It goes on to say
no new jhuggis will be allowed in Delhi. No new jhuggis comes up after 1st January 2015. If any jhuggi comes up after this date, the same shall immediately be removed without providing them any alternate housing. It also goes on to say that the government of the National Capital Territory of Delhi will use the following methods to ensure that no new jhuggi comes up. Government of National Capital Territory of Delhi has stated that procuring satellite maps every 3 months to keep an eye on any new constructions, new illegal constructions would not be removed immediately. Number 2, Government of National Capital Territory of Delhi is willing to do joint inspections with land-owning agencies at regular intervals, and any fresh jhuggis would be removed immediately. This is the Delhi government policy, sir. Number 3, Government of National Capital Territory of Delhi would enroll volunteers from jhuggi jhopri bastis who will act for the government and would inform government if any fresh jhuggi comes up in the area. Honorable Member, Now I Honorable want to Minister, come. a pointed response. Pointed response now, sir. The 7 government colonies which are coming up for redevelopment are spread over an area of 536 acres. 536 acres. And the number of jhuggi households which have been identified, both eligible and ineligible, is 507. Which means what we are dealing with is less than 1 jhuggi per acre of land. It is 0.8 acres. That is 1 jhuggi in less than 1 acre of land. Now, what we have done in terms of eligibility, for rehabilitation relocation, 100 EWS flats at Narela have been purchased from the DDA, out of which 90 have been allotted to eligible jhuggi households, of which 5 have already taken possession. After that, what happened, sir, is a large number of jhuggi dwellers, whether eligible or ineligible, went to the courts and obtained a number of stays. What we have here is, sir, in Sarojini Nagar, 136 applicants went to the Supreme Court, 53 to the High Court. I can list out all these. What has happened, sir, here, and the answer provides, in the particular question that has been asked, the answer is in the body of the question has been answered in the body of that. There were apparently 12 there. Those who are ineligible, the local authorities will, or they will move out. The eligible ones, we have provided alternate accommodation. Only very few have moved in there, and we stand ready to pursue that process, but it will be subject to the clearance of the courts, both the Supreme Court and High Court. Supplementary 2. Minister beats Winston Churchill in using the words. Thank you, sir. But my question was whether any action has been taken on authorities who were involved. My second supplementary is that in view of Ajay Makhan versus Northern Railway 2019, the judgment, DDA had to follow rehabilitation policy of Delhi government. I would like to know from Honorable Minister, which rehabilitation and resettlement policy does DDA follow if you say, if you undo, I won't say demolish, undo an informal settlement? Thank you. Honorable Minister, very pointed response, a pointed question. Very pointed response to a very pointed question. Sir, the answer simply is that the policy pertaining to the Delhi government has to be implemented by the Delhi government. I can tell you what the DDA is doing. Sir, sir, I can tell you that there are a total. Take your seat. Sir, there are a total. Honorable member, take your seat. There is a method how to raise an issue. Sir, there are a number of what are called JJ clusters. There are 299 JJ clusters which are under DUSIP. Honorable Minister, and there are 376 under DDA. Honorable Minister, the honorable member has pointedly sought response to a specific situation. You may respond to that. May I respond to that? Please. Out of the 300 plus 370 or so JJ clusters which are with the DDA, we have already done surveys in 210 of them. Recently, the Honorable Prime Minister released 3,000 flats in Kalkaji to the beneficiaries.
2 such other projects are ready. And we have under very advanced stage of processing the conversion of all the DDA clusters, JJ clusters under the DDA, which will be given modern flats, except, let me place on record, those clusters which are under DUSIP. I have said, since the Delhi government has not moved on them, the central government will conduct a survey and get them built into modern flats, because the central government has not moved on that. Shri Vijay Sai Reddy. Shri Vijay Sai Reddy. Shri Vijay Sai Reddy. Sir, we have only 3.52 homes have been sanctioned in situation development, redevelopment, sir. That is redevelopment of slums for providing concrete homes to slum dwellers in the same place under Pradhan Mantri Awas Yojana. And why is this vertical the most underperforming among the all components of PMAY scheme? Honorable Minister. Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana is carried out under 4 verticals: affordable housing in partnership, beneficiary-led construction, CLSS, and in situ slum rehabilitation. Sir, all 4 verticals move on their own dynamic. The BLC vertical is, if you own traditional family home, you will come to the government for a loan. The CLSS perhaps looks to be faster because it's a very simple. You locate a house which you want to buy or an apartment which you want to buy, typically a young couple which has got married and they need to raise a bank loan. They will go for a CLSS loan, they will get 3% upfront. In situ slum rehabilitation, by its very definition, requires the uprooting of people for some time. Let's say we have a policy now, jahan juggi wahi makan. That is, if you have an informal settlement in a place X, we will settle you there. But in the interim period, you'll have to move to another place till it is done. So I think there may be an explanation, but in situ slum rehabilitation, as I said, we have done surveys of 210 JJ clusters. We have already got 3 very good showcase pieces, which the Prime Minister released one, and all the others are going to come up, one in January and the other very soon. Shri Sushil Kumar Gupta. माननीय मंत्री जी, दिल्ली की सारी जमीन डीडीए के पास है। डीडीए दिल्ली में स्लम बनाती जा रही है। लैंड पूलिंग पॉलिसी में पिछले 20 साल से एक भी आपने प्रोजेक्ट पास नहीं किया। दिल्ली के किसान सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर, उसे सप्लीमेंट्री बात सर, मैं सर अपनी बात पूरी कर दूं सर, मैं पूरी बात मैं अपना क्वेश्चन कर लूं सर। कम विद योर क्वेश्चन। दिल्ली के अंदर हर चुनाव में भारत सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगाती है, जहां झुग्गी वहां मकान। दिल्ली के अंदर रेलवे लाइन के किनारे सैकड़ों स्लम है। दिल्ली इंतजार कर रही है। मेरा क्वेश्चन वही है सर, मैं क्वेश्चन पा रहा हूं सर, क्वेश्चन पा रहा हूं सर, सीधा क्वेश्चन पा रहा हूं सर। आज तक केवल 2 प्रोजेक्ट पास हुए, कठपुतली कॉलोनी का और कालका का, वो आपकी सरकार आने से पहले। आप कौन से प्रोजेक्ट कब ला रहे हो और कब इन झुग्गी वालों को मकान दे रहे हो, सपने दिखाते रहो। Honorable Minister. I am very happy to hear from the honourable member who belongs to Delhi that he has just handed over all the clusters, 299 JJ clusters, to the DDA, which are under DUSIP. Let me correct his understanding. Land is not owned all by the DDA. There is in Delhi DDA land, there is land owned by the LNDO, and there are other issues where you have a role to play. But if you decide to abdicate that responsibility, I have already offered all 299 clusters, we'll take over and develop them there. Because we have not even received a proposal from the state government for this. Shri Binoy Vishwam. Sir, I have a pointed question for a pointed response. For all such projects, will the government assure this House that the dwellers there, the poor people, they will be rehabilitated and then only the project begins? I thought I took the liberty of explaining in some detail what the policy is. This is a policy enunciated by the Delhi government in an order of 11 December 2017, which says that all settlers or informal settlements before 2016 in terms of bastis and all individuals who have there, they have to be rehabilitated. And this is precisely what the government in the center is doing. We would like all the others similarly to follow this. No, actually they've gone to the court. Please, otherwise you would have a situation. Per acre there is less than 1 juggi, and that also is in front of the court.
and we follow the norm scrupulously. I wish that were the case in some other areas also. Question number 47, Shri Mastan Rao, Bida. माननीय सभापति महोदय पटल पर रख दिया गया उत्तर। Honorable Minister. सभापत्र पे उत्तर रख दिया गया है सर। हाँ सभापति महोदय। Thank you, Chairman, sir. Question number 47. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय उत्तर सभापत्र पर रख दिया गया है। Supplementary 1. Sir, thank you, sir. Does the government intend to increase the provision of repayment of loans for MSMEs from 90 days to 180 days, as the working cycle of MSMEs may extend beyond 90 days and improve their repayment ability? Supplementary 2. माननीय सभापति महोदय, मैंने अच्छा प्रश्न किया है। विशेष रूप से उन्होंने जो एमएसएमई की ऋण सीमा है उसे बढ़ाने की बात की है। विशेष रूप से जो एमएसएमई है, हमारे जो क्वेश्चन में जो दिया गया है कि एमएसएमई की जो पीएमईजीपी है वो एक स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक प्रमुख क्रेडिट लिफ्ट सब्सिडी है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में संशोधन भी किया गया है। उसमें विशेष रूप से सेवा कर में जो 10 लाख रुपए दिया जाता था उसे 20 लाख रुपए कर दिया गया है, और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग में जो उसमें 25 लाख था तो उसे 50 लाख कर दिया गया। इस तरीके से योजना को बढ़ाया गया है। Honorable Member, second supplementary. Yes, sir. Thank you, sir. What efforts MSME Ministry is taking for implementation of existing schemes, and what action against non-compliant government organizations? Honorable Minister. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इन्होंने जो प्रश्न किया है उसमें ढेर सारी योजनाएं आरबीआई की योजना के द्वारा चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ईसीएल जीएस योजना, इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग जो यूनिटें हैं उनकी मदद कर रहे हैं। श्रीमती रंजीत रंजन। जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि विगत 3 वर्षों में आप ऋण बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विगत 3 वर्षों में देश में कितने लघु सूक्ष्म उद्योग हैं बंद हुए हैं? क्या ये सच है कि 2016 नोटबंदी के बाद आज तक जो एक आंकड़ा आ रहा है, वो सरकारी आंकड़ा मैं नहीं कह सकती, लेकिन 50-60 लाख एमएसएमई उद्योग धंधे बंद हुए हैं? क्या ये सही है? और क्या जो सरकार है इसका आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा सार्वजनिक करेगी कि आज तक 2016 से अभी तक कितने लघु उद्योग एमएसएमई उद्योग बंद हुए हैं, उसका क्या आंकड़ा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो लघु उद्योग बंद हुए हैं वो अभी पहले बंद नहीं हुए हैं, अभी हाल में कोरोना काल के समय बंद हुए हैं। कोरोना काल में जो बंद हुए हैं उन्हें सुचारू करने के लिए देश के उसी प्रधानमंत्री ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। उसमें 3 लाख रुपए उसे दिए गए थे। इसके बाद 1.5 लाख रुपए और उसमें जोड़े गए। अभी जो बजट पास हुआ है उस बजट में भी 50,000 करोड़ रुपए ऐड किए गए। 5 लाख करोड़ का ईसीएल जीएस का योजना जो बनाई गई है उसमें विशेष रूप से जो सिक हो गई थी, जो किसी तरीके से बीमारी हो गई थी, उन कंपनियों उन यूनिटों को ये पैसा दिया गया है। श्री तिरुचि शिवा। श्री तिरुचि शिवा। Sir, thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, the MSME is a very important sector in the country. Question, sir. Ask your question. Sir, my question, sir. The MSME sector, which is a very important sector in a country like ours, which is a thickly populated and unemployment looms at large. And recently, when the committee had an interaction with the bank officials, we came to know that the PMEGP. Your question, sir. PMEGP, which is the main source of income for the small entrepreneurs, are only, the applications are entertained only through online. Sir, rural women and those illiterate in the urban
are not Sir, what is your question to cannot the access to the online. So I would like to know the minister, number one, whether I think take necessary steps to continue offline applications also, Yes. and also in all the regional languages, because the applications are only in Honorable Hindi and Minister. English, and all the regional languages should be in the application. Honorable Minister? माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पीएमईजीपी की जो बात की है, विशेष रूप से हमारी जो एमएसएमई है, हमारे जो जितने भी वो हैं उन्हें मदद करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और विशेष रूप से इस योजना के अंतर्गत हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र सब्सिडी उसमें दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमारा जनरल हमारे लोग हैं उनके लिए 15 और 25% की सब्सिडी ये है। और उसी तरीके से एससी, एसटी या ओबीसी, उसके अलावा महिलाएं हैं या पर्वतीय लोग हैं, उनके लिए 25 से 35% तक ये सब्सिडी दी जाती है। उस सब्सिडी के आधार पर ये लोन दिया जाता है और एमएसएमई को ये सारी चीज़ें व्यवस्था की जाती है। श्री वीरेंद्र प्रसाद, बस हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। वन सेकंड, ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, सम्मानीय ज्येष्ठ सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है उनके बारे में उन्होंने जो कहा है कि ऑनलाइन तो चालू रहेंगे मगर ऑफलाइन से एप्लीकेशन आने का वो स्वीकार होगा क्या, इसके बारे में सोच के सजेशन फॉर एक्शन में देखो। या Honorable member. Thank you very much, sir. The scheme is very good. Through this scheme, credit facilities given to the marginal small industries, sir. Sir, your question. Yes, sir. Sir, ground reality is something different, sir. I tell you, Honorable Minister, generally Nodal agency took the... Sir, address the Honorable Minister Yes. through me and ask a good question so that I can direct the Honorable Minister to respond. Sir, Nodal agency took the application offline and online. The application received by Nodal agency, they recommended it banks for the credit, sir. But in ground reality is that bank is not obliged this application. More than 60% Your question, sir. Yes, sir. More than 65% application rejected by banks, sir. I want to know from Honorable Minister, if Government of India is going to some simple mechanism to help the cash flow. Honorable Minister. सभापति महोदय, विशेष रूप से इनका कहना ये है कि लोन के जो फार्म भरे जाते हैं बैंक उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। उनके बैंक विशेष रूप से लोन का जो प्रोविज़न है देने का बैंक उन्हें वो प्रोविज़न अपनाता है और उसमें एक कैटेगरी दी जाती है, उसमें ट्रेनिंग की भी सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ नहीं आती है, अगर कोई समझ में भी आती है, कोई शिकायत भी हम लोग को प्राप्त होती है तो हम लोग सीधा ज़िले में एलडीएम से बात करते हैं। एलडीएमओ का अधिकारी होता है, नोडल अधिकारी होता है, उससे कहते हैं इस केस को देखिएगा कि किन कारणों से ये लोन नहीं होगा। वो लोन होता है, विशेष रूप से उसकी फुलफिल करने के बाद ये लोन गरीबों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, श्री अब्दुल वहाब। क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Supplementary one. Once Gandhiji told in India, water, water everywhere, not a single drop to drink. This is, don't interfere, Mr. This one. When I am talking, everybody's interfering. Avail the opportunity to ask a question. Yeah, firstly asking, this Jal Jeevan Mission, it is a wonderful project. Even though it is a state subject, the central government came with Jal Jeevan Mission. We all welcomed and appreciated. Yes, Kerala is full of water, but we are going to get tap water, potable water. But what measure they have taken by the government to ensure clean water in every household, as per declared 2024. Honorable Minister. हरगर क्या? हरगर जल। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी बल्कि तथ्यात्मक बात कही है। 15 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो एक महत्वाकांक्षी संकल्प लिया था, मैं योजना नहीं कहूँगा, संकल्प कहूँगा, क्योंकि उन्होंने गांधी जी से अपनी बात शुरू की है। उस संकल्प के
पूर्ति के और परिणाम के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। और उसका परिणाम यह है कि जब 15 अगस्त 2019 को 3.23 करोड़ परिवारों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी था, जो देश का 16.72% था। आज की तारीख में 10.68 करोड़ परिवारों के पास पानी है, जो देश का 55.24% है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, केरल ऐसा राज्य है जिसके पास में 15 अगस्त 2019 को 223.55 ग्रामीण परिवारों में नल से पानी था। लेकिन आज, और जो समय देश की औसत से 16.72 अधिक था, उससे अधिक था राष्ट्रीय उससे औसत से, लेकिन आज देश का औसत 55% से ज़्यादा है, लेकिन केरल का प्रतिशत 45% है, वहाँ पानी है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, भारत सरकार पैसा दे रही है, करना राज्य सरकार को है, उनको योजना उनको ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। This is an authenticated report, not just I am telling. According to me, reply received from Rajya Sabha, 5 lakhs of schools are not having tap water. Can you, when in the 2024 you can do this one or not? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने भी कहा है, सदन भी जानता है कि पानी देने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन सुविधाएं और पैसा प्रदान करने का काम भारत सरकार कर रही है। देश का जो औसत है स्कूलों का वो 85% है, जिसमें झारखंड जैसे राज्य हैं जो बहुत पीछे है, उसके कारण शायद राष्ट्रीय औसत घटा है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 99% भी स्कूलों में पानी पहुंचा है। केरल के बारे में मैं फिर वही कहूंगा कि केरल सरकार अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाए, श्री ब्रजलाल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री ब्रजलाल। उत्तर प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जिसमें बलिया, बस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, उन्नाव, बरेली, सिद्धार्थनगर जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, बलरामपुर, मुरादाबाद, रायबरेली, बिजनौर, इन जिलों में पानी में परमिसिबल लिमिट से अधिक आर्सेनिक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसको प्रायोरिटी पे लेकर आर्सेनिक जल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय सभापति जी महोदय, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 2016 में चाहे फ्लोराइड से प्रभावित जितनी भी हमारी बसाहट थी वो लगभग 14,000 थी। आज 662 बसाहटें शेष है, जिसमें 433 में CWP के तहत उनका उपचार किया गया है। आर्सेनिक की स्थिति भी यही थी कि 2016 में 14,143 हमारी बसाहटें थी, लेकिन आज की तारीख में 761 बसाहटों में से 559 में ये प्रयोग कर दिया गया है। माननीय सदस्य से को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये लगातार प्रक्रिया जारी है और इस आंकड़े से समय पे पूरा करेंगे। Har Ghar Jal is a good initiative, sir, which got inspired from Mission Bhagirath from Telangana. The Honorable Minister in his reply said it is a state subject. Government of India only supplements with technical and financial assistance. Will the Honorable Minister kindly enlighten me of the proposal sent by Niti Aayog recommending 19,000 crores to Telangana state, which had initiated this Har Ghar Jal under the Mission Bhagirath Honorable program. Minister. So I would like to know, would they release the funds? माननीय सभापति महोदय, जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था तो राज्यों ने अपना लक्ष्य तय किया था। तो राज्य के लिए पैसा देने की बात है तो ये ग्रांट नहीं थी, बल्कि ड्रा करने का सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने सरकार ने तय किया। पिछले वर्ष का उदाहरण मैं कहूंगा कि 60,000 करोड़ का लक्ष्य था और अभी तक राज्य कुल 22,774 करोड़ ही ड्रा श्री सस्मित पात्रा। Question to the Honorable Minister is, considering that there has been issues of contamination, as a previous member has already mentioned, are there some specific cases of contamination that has been found in the state of Odisha per se? And what are the steps that the ministry has taken in order to... Honorable Minister. मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य को और विद्वान सदस्य मगर मैं उनकी जानकारी के लिए कि 2073 प्रयोगशालाएं देश में हैं, जिसमें 966 NABL है।
एक पैरामीटर ये है कि हमारी लैब्स उसको टेस्ट करती हैं, और दूसरा है कि हर पंचायत में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, और वो संख्या भी थोड़ी नहीं है, वो 15,40,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जो अपने किट के माध्यम से अपना खुद के घर का पानी या गांव का पानी टेस्ट कर सकती है, और ये लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। और मैं मानता हूं कि गुणवत्ता के लिए हम अपना पानी खुद टेस्ट करें कि वो पीने लायक है या नहीं, ये रास्ता भारत सरकार ने तय किया। Honorable Minister was the youngest member of the 9th Lok Sabha when I was also a member of Parliament and a minister. Question number 49, Shri S. Niranjan Reddy. With your permission, I ask question 49. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary one. Sir, while the answer correctly notes that urban transport is a part of urban planning, which is a state subject, I would wish to ask the Honorable Minister that the central policy of 2014, after noting this particular point, specifically stated that the central government will contribute its might by providing for a special law separate from Motor Vehicles Act. It would provide for an institutional framework and encourage states to have separate institutional framework, and it will carry out pilot studies in select cities in state governments. Sir, may I ask the Honorable Minister that since 2014, the answer seems to denote that none of this, especially with regard to pilot studies, have been carried out. Does the government intend to do it because they have no policy of bringing a Honorable Minister, it's a pointed question. Pointed question which merits a pointed reply. There is no policy of 2014. This is a state subject. There is a policy of 2006. Supplementary to Honorable Member. May I be permitted to enlighten the Honorable Member? The issue is in 2006. Honorable Minister, but the I have one assumption that senior advocates are normally enlightened. Honorable Member is one. Supplementary two. Sir, the 2006 policy with the revised statement of 2014 suggests a look-forward policy for considering urban transport planning rather than look backwards, where they provide solutions retrospectively. With the Chairman's permission, may I ask the Honorable Minister that since pilot studies were contemplated to be undertaken for doing this, have such pilot studies, since the answer seems to suggest that they have not been done, would they intend to do so now? Honorable Minister. The 2006 policy, which remains in force, envisages a broad policy framework for management, implementation of sustainable urban transport system in cities. Since the 2006 policy, the central government has introduced the Metro Rail Policy of 2017, Transit-Oriented Development Policy of 2017, and the Value Capture Finance Policy of 2017. Sir, the central government has made an offer that any state government, since this is a state subject, any state government, any government of any union territory wishes to have a study, a feasibility study financed by the central government, we stand ready to do it. Now the urban transport, which is also, let's say, metro, it has come up now from 2002, where it was 0 to 824 kilometers, which is operational, another 1,039 kilometers, which is in work. So it's rapidly expanding. All other statistics I can give. If the specific question is, has any study been funded, we must receive a demand for a study and we are ready to fund it. Shrimati Fozia Khan. Sabhapati Mahoday. On December 8 this year, the World Bank launched a toolkit on enabling gender-responsive urban mobility and public spaces in India, sir, with the aim of suggesting ways to make public transport in Indian cities more inclusive for women traveling requirements. Honorable Minister. Sir, 1 minute, sir. You asked, ma'am, you very pointedly you asked the question. Yeah, let the Honorable Minister but, respond. About this toolkit, I want to know what measures is the government taking to make sure that travel for women becomes more accessible and safe. And gender sensitivity is at the heart of all our urban policies, whether it is urban transport, whether it is any other form of transportation or any other listing. The cart of gender sensitivity lies in the fact that the urban Pradhan Mantri Awas Yojana envisages that the title of the home has to be in the name of the lady of the house or co-jointly. So equally,
In all other areas, we have gender sensitivity. But when the word toolkit is used, she said whether the World Bank toolkit, I get a little worried about the toolkit. World Bank is an international organization. They can prescribe. We have very good thing. So any specifics on what they want on gender sensitivity, I suspect our own plans in our urban transport are way ahead of anything that the World Bank may be recommending. Shrimati Yami Yagnik, I find more advocates are asking questions to the former diplomat Yami Yagnik. Thank you, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Minister, what steps is the government going to take to incentivize state and local governments to electrify urban transport, especially buses and point-to-point modes of urban transport, and encourage people to use public transport system when the public transport share is going down and is going to be 50% till 2030, and private use of private transport is going up. Happy that these questions are asked. Insofar as I'm concerned, I wear another hat, or I should say a turban, which deals with petroleum and natural gas. We are constantly on the lookout for moving from the use of petrol and diesel to electric vehicles, to moving towards green hydrogen, etc. There's a large number of steps we've taken. For instance, I can tell you on biofuels, we have gone from 1.4% of biofuel mixing in 2014 to 10%, which we did 5 months earlier. We had a target of 30%, 20% biofuel mixing. For 2030, we have brought it forward to 24, 25. My oil companies, the OMCs, have set up 22,000 electric vehicle charging stations. And I would like to assure the honourable member, my heart is exactly in the area she has pointed out. All the new rollout of vehicles which are coming in the next year, many of them, most of them will be electric vehicles. Now, what I am doing is only a part of what is being done by the Government of India. My colleagues who deals with the Ministry of, NHI and heavy industries, they are all dealing with this. So there's a plethora, there's a large bouquet of incentives which are there for electric vehicles. I'd be very happy to sit down with the honourable member to share. And keep in mind, the Honourable Minister has physical hat and figurative hats. Sir, my question is straight away pointed. Sir, in all cities, the urban transport has become very congested. In almost all the cities, there is no broader roads because the cities are built long, long ago. So now the question is, you have started metro rail in some of the cities, which is not affordable to the poor people. That is the main concern. So can you make the metro transport affordable to the poor people of all the cities across the country? The member has made a comment and then asked a question. He's entitled to Whether cities are congested, or there's been autonomous urbanization which has taken place from rural areas to urban areas, a fact. But it's a state subject, sir. And states will have to devise their own policies. What can we do from the center? As I mentioned, we encourage public transport, urban transport under different schemes. We encourage the purchase of buses. We encourage the metro system. Metro system, by definition, is a capital-intensive system. Now, the affordability, I agree, there has to be, because metro systems have to be self-sustaining. There are some state governments which would want to make metro system free, which means the metro will become like their state transport undertaking, buses, in other words, collapse. So a judicious balance has to be found, but we are in the part of those who are advocating bringing in more public transport, and that's why we have gone from 0 to 824 kilometers, another 1,039 coming. That in of itself is a testimony to the fact that public transport is being encouraged. We are already, sir, one of the largest metro operators. Very soon we will overtake South Korea, then we'll overtake Japan to become the third largest, and I'm sure by the time comes, we will be the second largest metro operator in the world. Question number 50, Shri Anil Prasad Hegde. States will make it free. States can make it free, like Delhi. Sabapati Mahoday,
This is my first star question in this house, sir. First of all, Question, sir? Question number 50. Oh, Honorable Minister. Sorry. बदल पर रख दिया गया. Supplementary one. सर, सभापति महोदय, ये मेरा पहला स्टार क्वेश्चन है इस सदन में. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू थैंक द मिनिस्टर. आपको बधाई देना चाहता हूँ इसलिए कि देश भर में जो खतिन और बुनकर और खादी का संस्था जो है, इसके सही हालत, इन लोगों को खतिन बुनकर का आमदनी क्या है, इसके बारे में आपने सही बात रखा है. और खादी, only that fabric is can be said as khadi, which is hand spun and hand woven. और अगर खतिन और बुनकर नहीं रहेंगे, आगे आपको खादी का कपड़ा ही नहीं मिलेगा. तो आपने जो जवाब में ये बताया है कि खतिन लोगों को एक गुंडी के लिए 7.5 रुपये दिया जाता है, मान्यवर, लेकिन ये एक दिन में खतिन लोगों को सिर्फ 10 से 12 गुंडी ही दिया जाता है. इसके मतलब इन लोगों का न्यूनतम आमदनी 100 रुपये से कम है, और वो भी उन लोगों को साल में 200 दिन भी उन लोगों को काम नहीं मिलता है. यही हालत बुनकर लोगों का. माननीय सदस्य, उन लोग आप मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न पूछिए मेरे माध्यम से. सीधा ये प्रश्न है कि क्या 2022 में MMDA जो है, बिक्री विपणन सहायता, 90% लोगों को, खादी संस्थाओं को और खतिन बुनकर को मिला है या नहीं मिला है? ये ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि जो गुंडी उसे 7.5 रुपये दिया जाता है. ये चूँकि हमारा जो विभाग है, उसमें विशेष रूप से हमारे जो कारीगर हैं, जो कारीगर जितना काम करते हैं उन्हें उतना पैसा उन्हें दिया जाता है. और विशेष रूप से ये किसी तरीके से हम लोग इन्हें देखते हैं कि जितनी भी इनकी जो काटते हैं, जितनी उन्हीं वो देते हैं, उसी के हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाता है. विशेष रूप से आने वाले समय में अभी 7.5 रुपये जो दिया जा रहा है, विशेष रूप से इसमें चिंता की जा रही है कि इनके उन्हीं के पैसे को बढ़ाकर 10 रुपये कर दिए जाए. इस पर ये चिंता की जा रही है, इस पर मीटिंग भी की जा रही है, और शीघ्र ही इसमें इसे पैसे को बढ़ा के ज़्यादा कर दिया जाए. ऑनरेबल मेंबर, सेकंड सप्लीमेंट्री. थैंक यू सर. आपने ये खादी का इस संस्था में KVIC का कोई रोल नहीं है, जैसे कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है, ये आपने जो बताए हैं. और बात यह है कि खतिन या बुनकर, ये दोनों लोगों को और खादी संस्थाओं को जो MMDA जो मिलना है 2022 में जनवरी से अभी तक मिला नहीं है. इससे जब तक खादी का संस्था जिंदा नहीं रहेगा, तब तक खादी स्पिनर और वीवर, खतिन और बुनकर नहीं रहेगा. तो क्या सरकार खतिन लोगों को, बुनकर लोगों को और खादी संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए कोई योजना? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने MMDA की बात की है. विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि MMDA में हमारे जो बुनकर भाई हैं, उन्हें अभी तक उन्हें 30% का MMDA दिया जाता था, अब उसे बढ़ा के 35% कर दिया गया है. और विशेष रूप से उनकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनके लिए और योजनाओं पर चिंता की जा रही है. और विशेष रूप से हमारे जो बाकी खादी हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो कारीगर हैं, जो घर पर बैठ के काम करते हैं, उनको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें किया जा रहा है. और MMDA जो ये बात कर रहे हैं कि जिन्हें नहीं मिला है, विशेष रूप से हर 3 महीने में उसकी समीक्षा होती है, और 3 महीने की समीक्षा के बाद MMDA उन संस्थानों को दे दिया जाता है, उन कारीगरों को दिया जाता है जिन कारीगरों के यहाँ से ये सारी चीज़ें बन के आती हैं. श्री शांतनु सेन. Respected Chair, for lending your ears to me. Sir, so far the nationwide... Respected Chair, thanks a ton for lending your ears to me. So far the nationwide performance of MSME is concerned, our state of West Bengal stands second, sir. But despite this, many a time we are facing many non-cooperation from our government of India.
So for the fund is concerned, so for the guidance. Dr. Saab, a pointed question to the Honourable Minister. So my question to my learned minister is, the states which are performing best, why don't you give some special preference or special attention to those states like our state of West Bengal? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपने राज्य के लिए और की योजनाओं के बारे में बात की है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि एमएसएमई पूरे देश भर में काम कर रही है और सबको पीएमईजीपी योजना, और अगर कोई यूनिट सिक हो गई है तो उन्हें किसी न किसी तरीके से उन्हें पुनः चालू के लिए ईसीएल-जीएस योजना, ये सारी योजनाएं चल रही हैं और पूरे देश भर में एमएसएमई उसका लाभ, जो सब्सिडी है उसका लाभ भी दे रही है, सारी चीज़ें दे रही हैं और आपके यहाँ भी ये योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ वहाँ के लोग ले रहे हैं। श्री अशोक कुमार मित्तल। पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम बड़े छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं अपने आर्टिजन्स की लाइफ को सुधारने के लिए। 200 रुपया पर डे की हम बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या छोटे छोटे 30 से 35% इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ हम बड़े स्टेप्स उठाने जा रहे हैं ताकि उनकी हम लाइफ को इस लेवल पर ला सकें कि बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिला सके और स्कूलों में शिक्षा दे सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने एमएसएमई में जो हम योजनाएं चल रही हैं उन्हें, चूँकि ये उन गरीबों के लिए हैं जिन्हें समय से उन्हें पैसा मिल जाए, उन्हें हमारे लोन भी उन्हें प्राप्त हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, और फिर जो कपड़ा काट के वो देते हैं संस्थानों को हम लोग भी एमएमडीए देते हैं। जितना वो काम करते हैं उसमें अभी हम लोगों ने बताया है कि 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है और 35% में संस्थाओं को भी पैसा देते हैं और जो गरीब आदमी हैं उन्हें भी हम लोग पैसा देते हैं जिससे उनकी आय बढ़ सके। श्री ए रहीम। Khadi is a symbol of our glorious freedom struggle. So no doubt it is an industry which needs to be protected and nurtured, and only then the welfare of the Khadi weavers and spinners can be ensured. My point is that the imposition of 5% of GST on Khadi clothes and 12% on ready-made Khadi products priced to over 1,000 rupees is negatively, badly affecting the Khadi industry. Sir, will the government consider making Khadi clothes and ready-made Khadi products exempt from GST? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने खादी पर जीएसटी की बात की है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि खादी पे जो खादी हमारे जो वस्त्र बनते हैं, जो हाथ से बुने जाते हैं, सारी चीज़ें बुनी जाती हैं, उन पर जो जीएसटी लगाई जाती है वो एक प्रावधान के अनुसार उसमें लगाई गई है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि खादी जो हमारे गरीब लोग बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए सरकार काम कर रही है। श्री दिग्विजय सिंह। सभापति महोदय, खादी इस देश के सबसे गरीब लोगों को रोजगार देता है और उसमें भी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, उसमें भी पेमेंट में देरी हो रही है। मेरे पास ये शिकायत है माननीय सभापति महोदय कि सब खादी की जो परिभाषा है वो साफ है कि उसमें किसी मशीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे पास ऐसी कई शिकायतें आती हैं, विशेषकर एक पश्चिम क्षेत्र के एक प्रांत से, जहां मशीन का उपयोग करके खादी का उत्पादन हो रहा है, जो कि मूल आप जो सोच है खादी के, उसके खिलाफ है। क्या ऐसी कोई शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आई है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य जी अगर कोई ऐसी चीज करेंगे तो निश्चित इस पर जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, श्रीमती ममता मोहंता। क्वेश्चन नंबर 51। ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। Answers laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री 1। धन्यवाद सर। अमरदा रोड एयरस्ट्रिप विकसित करके उत्तर ओडिशा में एक एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार के अभी तक क्या पदक्षेप लिया है, इसका एक संपूर्ण विवरण प्रदान करें। और क्या ये जमीन जो कि
प्रतिरक्षा विभाग का है, इसको राज्य सरकार का देने का प्रयास किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये प्रश्न अमरदा एयर स्ट्रिप के विषय में है और यहाँ डिफेंस के साथ हमारी चर्चा हुई है। जमीन आवंटित किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को उस जमीन के लिए रक्षा मंत्रालय को 26 करोड़ रुपए दिलवाने हैं और उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट को ही डेवलप करना होगा। सप्लीमेंट्री 2। सर, ओडिशा में पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 जनवरी 13 से शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में रखा जाएगा। मैं मंत्री जी को पूछना चाहती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्तर में खिलाड़ी और दर्शक भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम में एकत्रित होंगे, इसीलिए राउरकेला एयरपोर्ट का विस्तार होना जरूरी है। राउरकेला एयरपोर्ट का काम कब तक खत्म होगा और पैसेंजर के लिए क्या सुविधा किया जाएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, राउरकेला एयरपोर्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट है। यहाँ हमारी विचारधारा थी कि इसकी विकास और प्रगति करना अति आवश्यक है। तो सेल और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक मसौदे पर हस्ताक्षर भी हुआ है इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैसे भी ATR के डेवलपमेंट के लिए इस एयरपोर्ट पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नए एप्रन बने हैं राउरकेला एयरपोर्ट में 7 करोड़ का, और ये कार्य मुझे आपको कहते हुए, आपके द्वारा हाउस को कहते हुए खुशी है कि ये कार्य समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। यहाँ बाउंड्री वॉल की भी पूर्ण क्रियान्वयन हो चुकी है 2 करोड़ रुपए की। इसी के साथ रीसर्फेसिंग और रनवे का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरीमीटर वॉल 15 दिसंबर तक हो जाएगा और एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग के लिए 6 करोड़ रुपए हमने आवंटित किया है, जो इस 15 दिसंबर 2023 तक समाप्त हो जाएगा। जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल का आयोजन राउरकेला में किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने के लिए 2 कदम बहुत जरूरी है। पहला, एक CNS और ANS का हस्ताक्षर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच होना बहुत जरूरी है। मैंने ये निर्देश भी दिए थे दोनों विभागों को कि जल्द बैठकर इस पर हस्ताक्षर हो, और मुझे माननीय सदस्य को सूचित करते हुए खुशी है कि आज सुबह 10 बजे सेल और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में वो CNS AI एग्रीमेंट के बीच में हस्ताक्षर हो चुका है। दूसरा सर, एक चीज मैं सूचित करना चाहता हूं, अब केवल DGCA का इंस्पेक्शन बाकी है। जो 2B कैपेबिलिटी है इस एयरपोर्ट की, छोटे प्लेन के 2C एयरपोर्ट में परिवर्तित करने के लिए, ताकि ATR वहां लैंड कर पाए, जो आपकी भी इच्छा है। और जो बिड्स उड़ान में दिए गए हैं अलायंस एयर को ATR भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच में, और बिग चार्टर को कोलकाता और राउरकेला के बीच में, वो ट्विन ऑटर छोटा प्लेन है, दोनों को हम लोग क्रियान्वयन करेंगे एक बार जब ये लाइसेंसिंग ATR के लिए DGCA के द्वारा दिया जाएगा। श्री GVL नरसिम्हा राव। Thank you, Chairman sir. Under UDAN Regional Connectivity Scheme, 28 seaplane routes and 115 helicopter routes have already been sanctioned. I would like to know from the Honorable Minister, what is the status of these UDAN operations? And in Visakhapatnam cruise terminal also there was a similar proposal for promotion of tourism. I would like to know from the Honorable Minister. Honorable Minister. Sir, what is extremely important in India today, and I would like the indulgence of your office, sir, to inform the House, is that we have very effective international to domestic connectivity. We have very effective domestic tier 1 to maybe tier 2 connectivity. But certainly the concentration has to be on last mile connectivity. And that is very clearly the question that the honorable member has focused on. Because last mile connectivity through civil aviation is very key. That last mile connectivity can only be given by small planes, less than 20 seaters, by seaplanes, and by helicopters. With that in mind, sir, our ministry has tweaked the UDAN scheme. The UDAN scheme used to be for sub-90-seater planes. We have now introduced a new mechanism under UDAN, which is a small aircraft scheme
only dedicated to less than 20-seater aircraft. And under that small aircraft scheme, which we have launched in Udan 4.2, I'm very pleased to inform the House that a total of 132 routes have been awarded, out of which 16 are helicopter routes, 50 are seaplane routes, and only 66 are fixed-wing routes. So many states will get the benefit of last-mile connectivity through this Udan small aircraft scheme, and even across the geography, from Telangana to Lakshadweep, all the way to our hilly states, to the northeastern states, to Assam, we have provided connectivity through these awards that we have given in this latest round of Udan 4.2. Shri Sukhendu Shekhar Roy. I would request the Honorable Minister to kindly inform this House that House whom the air connectivity between Kolkata, Malda, Balurghat and Kujibihar shall commence. Sir, as I have mentioned before, that the civil aviation sector is a deregulated sector. It is completely incumbent and upon the airlines to choose their route. Certainly through Udan, we do offer airports that are Alpasevit or Asevit, either underserved or not served airports. The Honorable Members' party's delegation had come to meet with me. We have also informed the Honorable Members' Party about certain requirements of land in West Bengal. We have also requested if they can lower their ATF on VAT, which 16 states across the country have already lowered, in addition to the 12 states that only had charged between 1 to 4%. So 28 states today charge VAT on ATF of only 1 to 4%, and there are only 8 states left in the country that charge exorbitant VAT on ATF between 20 to 30%. I would urge the member to request his government in West Bengal to lower that rate. If he does, it will certainly lead to a new impulse for greater connectivity into West Bengal and even greater refueling in West Bengal and greater revenue. Shri Vaiko. Honorable Minister has given a vivid description about the steps being taken for Odisha. I would like to know from the Honorable Minister whether the same yardstick will be applied to my state, Tamil Nadu. Honorable Minister. Of course, sir, without doubt. It is our job, our responsibility to make sure that every state across the length and breadth of India emerges in the area of civil aviation. And I would like to inform the member that in the last 8 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where we had only 74 airports until 2013-14 in our country, we have added 71 airports, waterdromes and heliports, increasing it to 145, and I commit to the honourable member also that this number will surpass 200 in the next 5 years, increasing air connectivity in our country. And also his airport in Chennai, which is very much a concern for our people, our citizens in Tamil Nadu. That airport in Parandar also we are looking at very aggressively so that we can provide a new greenfield terminal in Chennai as well. And the commitment is through the chair, Shri Biplab Dev. Honorable Chairman Sir, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद कराना चाहता हूं, जो त्रिपुरा में कैलाशहर में एक नया एयरपोर्ट के बारे में त्रिपुरा सरकार ने जमीन देने की व्यवस्था की है और आपके दफ्तर से त्रिपुरा सरकार को कम्युनिकेट किया गया है 6 मंथ लगेगी इस जमीन को देखभाल करने के लिए। तो मेरा ही कहना है जो आपके दफ्तर के माध्यम से कब तक कैलाशहर की एयरपोर्ट की अनुशंसा की जाएगी और कब तक हो सकती है? धन्यवाद। सर, ये प्रश्न उल्टा पे था, मैं निवेदन करूंगा बिप्लब देव जी को, क्योंकि वे बेहद उत्सुक थे पूर्व में भी कि इस एयरपोर्ट का विकास हो। जरूर हम लोग इस क्वेश्चन आवर के बाद मिलें और इस पर विश्लेषण करके हम आगे का रास्ता तय करेंगे। Question number 52, Shri Digvijay Singh. Thank you, sir. Question number 52, sir. Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable Member, supplementary one. Sir, my question is very simple. Whether any such complaint has been received by the Karnataka State Grievance Redress and Monitoring System or by the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System. Honorable Minister.
The issue of somebody, whether in the state of Karnataka or anywhere else, who's ineligible, being given a house to which he or she does not conform to the criteria, does not arise. We had some case. Let me provide the simple, there is the facts are given. Sir, this is a reference to a CAG report which dealt with the allotments in the period between 2015 and 21. The Honorable CAG Minister, report dealt with Honorable 16... member wants a pointed response. Sir, sometimes you can't ask a question which such as, have you stopped doing so-and-so? Yes and no, both. It has to be an explanation. And if you indulge me for 1 minute, I will explain that to you. A total of 7 lakh homes have been sanctioned in Karnataka, out of which 2,97,000 have been already provided to people. This CAG report deals with a sample size of 16,000. 33 cases were found of duplicity. This is because the duplicity issue came in because the sanctioning authority in Karnataka, which is the Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited, said that they did not have, state is informed that the cases referred to in the audit report belongs to initial phase of the mission where feature of duplicity check was not in place in the MIS system. So it is now, when they were discovered, the 33 cases, they were completely removed. Now, we do not do we only receive from the state government and we vet them. There is not a single case where anybody can get an eligibility. We have also tied it House to is 2018 to adjourned till 2 p.m.